It's been close to 24 hours now that Jharkhand does not have a government. The irony is that while on the one hand there was no movement forward on the swearing in of a chief minister after Hemant Soren resigned yesterday night, there was hectic movement in every other aspect. First, Hemant Soren was produced before a special PMLA court and sent to one-day judicial custody. But despite that, he put up a brave face, smiling and waving to the crowds outside the court. Then in the evening, JMM MLAs led by Champai Soren met the governor and staked claim yet again to form the government. Remember, yesterday, after letters of support of 43 MLAs were shown to the governor, he didn't give a go-ahead for the swearing-in, claiming that he was ascertaining technicalities. The governor's silence has naturally made INDIA nervous. No wonder then that chartered planes were pressed into service to whisk away 35 MLAs of the RJD and the JMM to Hyderabad. But before that, all of these MLAs actually did a head count on camera to reassert, we have the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, All right, all 43 of them loud and clear with a beaming Champai Soren. In fact, all of INDI also has now united behind Hemant Soren and the JMM, not just to question why the JMM leader was arrested, but also questioning the government's silence on government formation. INDI leaders have also alleged that only because Hemant Soren is from a tribal community, he is being victimized. Subsequently, Hemant Soren's family released a 5-minute video of him soon after his arrest, where he can be heard accusing the center of targeting an elected tribal leader and torturing the backward community. आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। I want to ask a fundamental constitutional legal question for which we have only received stunning silence for the last 18 odd hours. Yesterday in the Jharkhand Assembly, where the whole world knows that the figures are roughly 47 or 48 majority and roughly 33-32 opposition. After the Honorable Chief Minister had submitted his resignation to the governor and a new Chief Minister with the numbers known was proposed, why has the governor been paralyzed into inaction for the last 18 hours? The focus now is on the tribal vote. Is this going to be a bitter fight for the tribal vote after the arrest of Hemant Soren and the action taken against him? Will this actually turn away the sizable tribal vote across the country from the BJP? Because that's how INDI is projecting it.
All of the opposition alliance is calling it action against one community, but will that allegation really stick? Joining us is Sanju Verma, BJP national spokesperson, political commentator, JVC Sriram, Dheeraj Dubey, spokesperson of the JMM, and Kanchana Yadav, spokesperson of the RJD. Why are you acting against a man who is a face of young tribal leadership in the country, Sanju Verma? Padmaja, I think this is a very dangerous and a very devious narrative that is being peddled. So Hemant Soren has been arrested after he refused to comply with 10 summons that were sent to him. The first one being way back in August 2022, the 10th one being on the 27th of January 2024. If the ED had to act out of hand and in a draconian manner, then under section 50 of the PMLA Act, after the first 3 summons, if the accused does not comply, ED can suo moto go and arrest the concerned person, which the ED did not do. And I want to ask Hemant Soren. पहली बात तो हेमंत सोरेन सारे जो आदिवासी हैं देश के शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, उनके ये अकेले रिप्रेजेंटेटिव या कर्ता धर्ता नहीं है. So please don't make this about tribals versus BJP. This is only about corruption. This is about money laundering. This is about land scam. This is about a mining scam. And I think a lot of skeletons will come out of the cupboard, because now I'm told that, there is also a human trafficking angle which is being probed, and there is also a huge Manrega scam which has been unearthed. And I want to just read out from give me 10 seconds. Jharkhand High Court in April 2022, Hemant Soren had filed a petition saying that the investigation against him should be quashed. This is what the Jharkhand High Court said. It said all is not well in the mining department, because don't forget that Hemant Soren has been the mining minister along with being the chief minister of Jharkhand for the longest time. All is not well in the mines department, said the Jharkhand High Court. And then it said that the prosecution by the ED reminds one of a crime thriller where the state withers and the crime cartels, along with political connections, are completely oblivious to the fact that the public is being taken for a ride, and there is a clash for natural resources of the state by the leader of the state himself. This is what April 2022 the Jharkhand High Court said. Then in 2023 Hemant Soren went and knocked on the doors of the Supreme Court. मैं हेमंत सोरेन से एक चीज पूछना चाहती हूँ. मान लीजिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द हैंडमेडन ऑफ द बीजेपी. मान लो कि बीजेपी आपकी सरकार आपसे छीनना चाहती है. वी वांट टू रिड्यूस यू टू अ मेजॉरिटी. Are you telling me that the Supreme Court is also a handmaiden of the BJP? Okay. Supreme Court, why did it quash your petition? You said investigation against me should be quashed. The Supreme Court said nothing doing. The Enforcement Directorate has every right to probe. बोल रही है कि इस तरह से किया जा रहा है क्योंकि ये आदिवासी बहुल राज्य है. 29% आदिवासियों की आबादी है. ये ऐसा तबका है जिसको नीचे से ऊपर उठाने के लिए आज भी हमारी सरकार नहीं, केंद्र की सरकार भी प्रयास कर रही है. लेकिन अभी जो डंडा चलाया जा रहा है एक उठे हुए व्यक्ति को, जिसके पिताजी ने संघर्ष करके अलग झारखंड राज लिया, जिन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, जिनकी जो सुदखोरी और महाजन प्रथा में जिन आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती थी उसको वापस जमीन दिलाने का काम करते थे. आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कई ऐसे आदिवासी लोग थे जिनका महाजन जमीन हड़प लेते थे. उनको जब ये जमीन वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उस समय भी एक व्यवस्था थी जो 70-75 FIR जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं उनके पिताजी शिबू सोरेन जी के खिलाफ किया गया था. शूट एट साइट का आदेश इन पे जारी हो गया था कि जहां दिखे गोली मार दो. तो जब भी आप किसी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हैं जो सामंतवादियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ता है. उसके लिए आपको जेल जाना पड़ता है, आप पर मुकदमे दर्ज होते हैं. ये झारखंड ने देखा है. पर दुबे जी, आप जो हेमंत सोरेन है वो संघर्ष करने के लिए जेल नहीं गए हैं, वो करप्शन के चार्जेस पे जेल गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जेल गए हैं. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई जन आंदोलन किया है. और जहां तक कि ट्राइबल्स का बात है, आपने ट्राइबल बहुल इलाकों की एक स्टेट की बात की है जो कि आपका झारखंड है, जो दूसरा स्टेट है विच हैज गॉट a huge tribal population. Let's talk about Chhattisgarh. As far as the tribal
dominated areas in various states is concerned, I want to tell our viewers that actually the tribal vote between 2018 and 2023 in 3 states which have a large tribal population, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, has grown. So you have from Chhattisgarh, it has grown from 3 to 17. In Madhya Pradesh from 16 to 24, and in Rajasthan from 9 to 12. I want to specifically now look at how Jharkhand has voted in the Lok Sabha elections, and let's look at the vote share over there. Between the UPA and NDA, actually the vote share of the NDA among the scheduled tribes was 65% in the Lok Sabha elections 2019 as opposed to the 29% that went to the UPA. तो कंचना यादव जी, ये कहना कि ट्राइबल्स जो हैं सिर्फ एक पार्टी के साथ है, जेएमएम के साथ है, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, आरजेडी के साथ है, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। आंकड़े तो बता रहे हैं कि झारखंड में ही ज्यादा ट्राइबल Padmada, it's not about the tribal. Data always tells the truth. Let's look at it. 96% of CBI cases are registered against the opposition leader, and 95% of ED cases are registered against the opposition leader. And you know that the corruption point has increased up to 7 points. From 85th position to the 93rd position, and even the opposition leader are corrupt. This is very fancy, but bitter truth is whoever मैडम एक सेकंड अभी बात हो रही है। पूरे दिन जो है हेमंत सोरेन से लेके जेएमएम ने बोला कि आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है। मैं आपको सीधा सीधा डेटा दिखा के पूछ रही हूं कि अगर बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ जंग लड़ रही है तो आदिवासी बीजेपी को झारखंड में ही क्यों वोट डाल रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी जो पूरा ट्राइबल इलाका था, अभी असेंबली इलेक्शंस में सरगुजा का पूरी ट्राइबल सीटें सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं। तो वही आदिवासी जिनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी जंग छेड़ के बैठी है, वही आदिवासी उनको वोट क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा दरअसल बीजेपी उन राज्यों में टारगेट कर रही है जहां ऑपोजिशन स्ट्रांग है, और ऑपोजिशन में अगर ओबीसी एससी एसटी है और ऑपोजिशन में अगर वो झुकता नहीं है मोदी जी के सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसको बीजेपी परेशान कर रही है। आप अभी बिहार में देखिए, नीतीश कुमार जी ने रिजाइन किया, 2 घंटे के अंदर उनका फिर से शपथ हो गया। लेकिन क्या हो रहा है झारखंड में? इसका मतलब कि अगर ओबीसी में जो मोदी जी के सामने नहीं झुकेगा, एससी में एसटी में जो मोदी जी के सामने नहीं झुकेगा और उनके साथ हाथ नहीं मिलाएगा, उसको ये लोग जेल के अंदर कर देंगे। लेकिन भाई हमने देखा हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम में उनका प्रमोशन हो गया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आप महाराष्ट्र में देखिए, जिसको ये कह रहे थे चक्की पीसिंग, उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। Okay, let's address this. Nitish Kumar sworn in within hours, but it's been 24 hours, no swearing in Jharkhand. So much so that now you've got MLAs of the JMM who are on a chartered flight, Sanju Verma, with their bag and baggage, smiling from year to year because they know they are going to thwart your designs. Sanju Verma. Padmaja, I have to rebut what the RJD panelist said. She said, जो मोदी जी की बात नहीं मानता है, उनको ये लोग जेल भेज देते हैं. So let me remind her that the first FIR against Lalu Yadav was filed when the Congress was in power at the center. The first charge sheet against Lalu Yadav was filed by taking a special permission from the then governor A.R. Kedwai by the Congress government. The first conviction of Lalu Yadav happened in 2013 when it was not Narendra Modi who was in power, but Sonia Gandhi / Manmohan Singh's government that was in power. तो पहली बात डिबेट पर पढ़ लिख कर आया कीजिए, आपके फैक्ट्स गलत हैं। सेकंड, मुझे एक बात बताइए पद्मजा जी, हर क्राइम के केस में हमें बताया जाता है 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। One is bona fide intent, one is proceeds of the crime need to be established, and the third is money trail. Now please understand, हेमंत सोरेन की बात तो हम करेंगे ही, ये जो यहाँ बैठकर लालू जी की बड़ी गुणगान कर रही थी, इनको बता दूं that लालू यादव के फॉर्डर स्कैम एंड IRCTC स्कैम में ये कुछ लोग हैं जिन्होंने विटनेस और अप्रूवर बनने का काम किया है। लिसन टू द नेम्स, आई एम एजुकेटिंग यू। विजय कोच्चर एंड विनय कोच्चर, both directors of Sujata Hotels, Prem Gupta, the ex Rajya Sabha MP of RJD,
एंड लारा मार्केटिंग प्रोजेक्ट कंपनी, वीके अस्थाना, आरके गोयल। मतलब आप ये कहते हो वीके अस्थाना जो विटनेस बन गए हैं वो झूठ बोल रहे हैं, आरके गोयल झूठ बोल रहे हैं, आपके पूर्व राज्यसभा के सांसद प्रेम गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। बात ये है that when an arrest is made, please keep quiet now. I did not heckle you. Keep quiet. चुप हो जाइए। Okay. Quickly, please make your point. Yes. मैंने आपको सुना बड़े धैर्य से, अभी बीच में मत टोकिए। My limited point is this, Padmaja. Today I want to highlight one thing. Look at the dangerous narrative. हेमंत सोरेन अरेस्ट होते हैं तो डॉट अलायंस बोलती है, जबकि अलायंस तो खैर बचा ही नहीं है। कहते हैं अरे आदिवासियों पर हमला है, मतलब लालू यादव को जब अरेस्ट किया गया तो यादवों पर हमला था। अभी राहुल गांधी बोलेंगे, राहुल गांधी इज आउट ऑन बेल इन द नेशनल हेराल्ड स्कैम। अरे मैं तो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे नेशनल हेराल्ड स्कैम में फंसाया जा रहा है। लुक एट द स्टूपिडिटी, द डीवियसनेस ऑफ द ऑपोजिशन। और जब नीतीश कुमार आपके साथ थे तब कहते थे सब चंद्राक्षी, सब बहुत अच्छा है। जब अभी इस पार आ गए तब आप कहते अरे नीतीश कुमार और बीजेपी इन दोनों का एक साथ होना तो बहुत So then Sanju Verma, in that case you are establishing कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबको समन्स भी जा रहा है irrespective of what their caste is. JVC Sriram, do you think, given the kind of support that Hemant Soren has got from across the board, and they are all pretty much saying the same thing, that tribal leader is being victimized, this could be a possible issue that will help INDI? To all the panelists and your viewers, I need to tell you that it's not going to make any difference. It's absolutely not going to make any difference, because I can give you 108 reasons why tribals have been voting for Sri Narendra Modi. 1.28 crore tribal homes are now fitted with Jal Jeevan Mission. 38 lakh houses have been constructed under PM Awas Yojana. Over 82 lakh health cards have been given to tribals under the Ayushman Health Scheme. And fund allocation has increased for tribal students has been hiked from 978 crores to 2,546 crores. And I can go on like that. 30% of revenue which is coming from mining activities is being spent in tribal development, with over 57,000 crores raised for this purpose. So this whole narrative that just because Hemant Soren has been arrested, the tribal, he is a convicted former union minister, a convicted former chief minister, and he is heading the party. And they are the masters of the doctorate of corruption. Okay, tomorrow morning at 10:30 a.m. is when the plea of Hemant Soren is going to be heard. It is by a special bench comprising Justices Sanjeev Khanna, M.M. Sundaresh and Bela Trivedi is what we are being told right now in court number 2. So it's being fought at 2 levels, in court and of course politically. Both of them are going to be very, very interesting. For now, 35 MLAs safely sequestered away in Telangana, the one state where the Congress and INDI now think that the BJP is not going to be able to make inroads with their suitcases. Thanks very much, all gentlemen. Sanju Verma, I suspect we'll be talking about this a lot more tomorrow, a very crucial day in this case. I'll see you then. Thanks for watching.